Pressure. Pressure. जी हाँ. Pressure. What exactly is pressure? Imagine if you press a finger over here. Where are you feeling the effect of force? कुछ तो force तो लगा है. Pressure is dependent on force. ये समझ में आ रहा है क्योंकि force पर लगा है. अगर मैं ऐसे करके रखती हूँ, does it hurt? No. But if I put force कम लगा है. यहाँ पे I am applying more force. Does it hurt? Yes. So can I say pressure is somewhat dependent on force? Sit straight, sit straight, sit straight. Somewhat dependent on force. अच्छा, what else can it depend on? Let us try to figure out. If I apply force here, where does it hurt? Does it hurt on your bum? Where will it hurt? It does not hurt on you. In that place itself. Where will it? So wherever I apply the force, it will hurt over there only. Now, this is a knife that I have in here, and this is some thermocol ka piece. This is the sharp side of the knife. Can you see? This is which is the sharp side? This is the sharp side of the knife, and this is the blunt side of the knife. This is the sharp side of the knife, and this is the blunt side of the knife. So which has more surface area? किसका surface area ज़्यादा? Sharp side का ज़्यादा है या blunt side का? क्या हो सकता है surface area? Area, surface का area कितना किसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा है या इसका ज़्यादा है? Blunt. Which place has more area? Sharp or blunt? Blunt side has more surface area. Sharp side has less surface area. Now let us try to cut it. If I try to cut it, I am able to cut this thing with the sharp side. Somewhat I am able to cut it. ऐसे करके cut करेंगे तो. So if I try to cut it like this, will it cut from the sharp side? Slowly, slowly I am cutting, so it is cutting from the sharp side. See, I have cut it. What about the blunt side? Let us try to cut it from the blunt. Sit straight, I told you. Sit straight. Blunt side से cut होगा? Blunt side से cut होगा? ना. थोड़ा सा होगा. थोड़ा सा होगा. कम होगा. कम होगा. ज़्यादा cut नहीं होगा. इतना समझ में आ गया? This example you have understood? What I told you? Okay. Let us now come to the concept of pressure. Pressure is thrust. Perpendicular thrust or total. Right. Let me explain. Pressure is thrust acting per unit area. Now here there are a lot of new words. एक तो है thrust, एक है unit area. These are two things that we have to understand. So let us understand what is thrust. Perpendicular force. Thrust is nothing but it is a force only, but it is a perpendicular force. Can I say this force is perpendicular to this wall? 90 डिग्री पे है कि नहीं? तो ये जो force है इसको हम thrust बुलाएंगे. अगर मैंने ऐसे force अप्लाई किया इसको thrust बुला सकते हैं? No. No. Why? Because it is at a certain different angle. The forces which are perpendicular to the surface, the forces which are, Perpendicular. where are you? The forces which are, Perpendicular. समझा नहीं? perpendicular गिर रहा है. ये surface पे perpendicular force, perpendicular है कि नहीं? That is called as Thrust. thrust is a force. अगर उस surface में perpendicular. अगर ऐसा गिरा ये इसको हम लोग thrust नहीं बुला सकते. This is simply force. But अगर ऐसा गिर रहा है तो इसको क्या बुलाएंगे? Thrust. So thrust is a type of Force. So what will be the unit of thrust? Newton. Newton, because it's a type of force. It's a special type of force. Pressure is thrust acting per Unit area. unit का मतलब क्या होता है? कोई unit. Unit. Iron. नहीं, unit मतलब actual meaning of unit क्या होता है? One. Unit, units place मतलब क्या? One's place. हाँ. Unit means one. So pressure is thrust acting per 1 meter cube area और 1 centimeter cube area. वो 1 होना चाहिए. ऐसा definition बोलता है. Understand? So what is pressure? Let us write down. Thrust is what? Thrust is the perpendicular component of force. Thrust is perpendicular force acting. So this perpendicular force acting on the body. So can I say out of
F1, F2, F3. Which one is thrust? F2. To F2. F2 is the thrust. Why? Because it is a perpendicular force. अभी क्लियरली समझ में आया? चलो, thrust समझ में आ गया, pressure समझ में आ गया. So pressure is given by the letter P. Pascal. Pressure is thrust. Pressure is thrust per मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकंड मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई या डिवीजन? नहीं, division. मीटर पर सेकंड Division. डिवीजन होता है. So pressure is thrust acting per. Area square. Per मतलब this. Per unit area. Area square. एरिया स्क्वायर नहीं होगा, एरिया मीटर स्क्वायर होगा. एरिया. Pressure P is thrust. That is a type of force acting on unit area. This over. We are not writing units. F, P and A. F, P and A are symbols, not units. Now we will write units. जैसे force was, जैसे moment of force was, कितना force अप्लाई किया मैंने इतने एरिया में, उसको बोलते हैं प्रेशर. समझाया कि नहीं मैंने? इस एरिया में कितना फोर्स अप्लाई किया, ये प्रेशर है कि नहीं? मोमेंट ऑफ फोर्स क्या था? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस. एंड व्हाट इज प्रेशर? Thrust upon area. थ्रस्ट अपॉन एरिया. तो थ्रस्ट का यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट बताओ. Newton. एसआई यूनिट और सीजीएस कर लेते हैं. एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. एरिया का एसआई यूनिट क्या होगा? एरिया. Correct. And what will be the CGS unit of the thrust? Centimeters. So what are the two units of pressure? Now we are moving on to units. Pressure के क्या क्या units हैं? Newton meter square या फिर CGS unit will be dyne centimeter square. इसमें कोई यूनिट ना. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं पास्कल. क्या बोलते हैं? अरे ये तो 7 में कुछ पास्कल. क्या बोलते हैं? Dyne. पास्कल. डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर में कुछ नहीं. एसआई यूनिट इज समथिंग वी यूज रेगुलरली. देयरफॉर एसआई यूनिट्स यूजुअली हैव नेम्स. Dyne किसका नाम पड़ा? डाइन इज आल्सो नेम ऑफ अ साइंटिस्ट. पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम. यस. पास्कल ही स्टडीड द आइडिया. चुप, एकदम चुप. सब चुप. Pascal is the name of a scientist. It is given by letter capital P, small a. No, don't write small p, small a. So what is Pascal? Pascal is Newton per meter square. Other units. जैसे कि फोर्स के अदर यूनिट्स है ना, kgf, gf, वैसे ही प्रेशर के भी अदर यूनिट्स है. पास्कल ना. अदर यूनिट्स पास्कल कैसे हुआ? तो ऐसा ही यूनिट है. पास्कल का यूनिट. पास्कल के अदर यूनिट्स है. प्रेशर के अदर यूनिट्स माय डियर. प्रेशर के अदर यूनिट्स. 1 किलो पास्कल. ये के मतलब किलो, तो ये कितना पास्कल होगा? ऑब्वियसली 1000 पास्कल होगा. 1 किलो पास्कल विल बी 1000 पास्कल. 1 एटमॉस्फेयर, 1 atm मतलब 1 एटमॉस्फेयर. दिस इज इक्वल टू 1.013 पास्कल. This is also equal to 76 centimeter of mercury. Very, very important conversions. Always comes in exam. One of them will come in your exam. So what are the units of pressure? SI unit of pressure is Pascal, which is nothing but Newton per meter square. CGS unit of pressure is dyne per centimeter square. No name of scientist. What are the other units? 1 kilopascal is how many pascals? 1000 pascal. 1000 pascal. 1 atmosphere, ATM. 1.013 to 10 to the power 5 pascal. Sorry. 1.013 to 10 to the power 5 pascal. तो किलोपास्कल में आएगा ना 1. हाँ, या फिर you can write 101.3 kilopascal. वो भी लिख सकते हैं. और it is 76 centimeter of mercury. It is 76 centimeter of mercury. All these conversions should be clear. This is